Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ateequrrahman Vtc teacher. I very welcome you all students to this Bmc Vtc online video session. And in this today's session students, we are going to learn about compound interest and standard 8th in mathematics subject. So today we are going to learn about application of formula for compound interest. तो बच्चों आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे मरकब सूद के ज़ाब्ते का इतलाक़ जो है उसके बारे में, और साथ ही हम जो है तो प्रैक्टिस सेट 14.2 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मरकब सूद के ज़ाब्ते के इतलाक़ से एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। So the formula for finding the amount by compound interest can be used to solve examples involving population growth and depreciation or decrease in the value of machinery और प्रॉपर्टी। तो बच्चों हम देखते हैं आमतौर पर कि मुरक्कब सूद के तरीके से कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ते का जो इस्तेमाल है वो कहीं मिसालें हल करने के लिए किया जाता है। इसमें हम आबादी में इजाफ़ा है या किसी मशीन या मिल्कियत की कीमत में कमी या ख़सारा, जिसे हम जो है तो डिप्रिसिएशन कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए होता है। एंड द फार्मूला इज A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N is used those situation where increase on the previous increase and reduction on the previous reduction has to be calculated। तो बच्चों हम जो ज़ाब्ता यहाँ पर देख रहे हैं A बराबर P कॉस में 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N, इन हालतों में इस्तेमाल किया जाता है जब साबिक़ा कीमतों में इजाफ़ा या कमी की तहसीब करना होती है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नुकसान या खसारे की सूरत में खसारे की शरह R मनफी ली जाती है। ओके, सो इन केस ऑफ रिडक्शन the rate of R is taken to be negative। Okay, so here is on your screen the first question is here. On the construction work of a flyover bridge, there were 320 workers initially. The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अबूरी फ्लाईओवर पुल की तामीर में इब्तिदा में 320 मज़दूर थे। हर साल मज़दूरों की तादाद में 25% इजाफा होता है, तो 2 साल बाद इस काम पर कितने मज़दूर हो गए। ठीक है, सो यू सी है दैट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली 320। यहाँ पर मज़दूरों की इब्तिदाई तादाद अगर हम देखें तो वो है 320, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर्स जो है मज़दूरों की तादाद में इजाफे की शरह जो है तो 25% है। ओके, पर ईयर। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर A नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ पर जो है तो देखना है। ओके, यहाँ पर जो है तो 2 साल बाद मज़दूरों की तादाद वो है N। ओके, वो है A, सॉरी। सो इस तरह से हम देखेंगे N जो दिया है वो 2 साल है। सो यहाँ पर हमने ज़ाब्ता रखा है A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। सो P इज़ 320, 1 प्लस R कितना है 25 अपॉन 100 रेस टू 2। सो यू सी है दैट 320 अपॉन इंटू
125 in upon 100 into 125 upon 100. So you will see here, after solving this step, you will get here 55 lakhs upon 1000. So you will see here that these 30, this 30 will cancel, and you will get here 500. So there will be 500 workers after 2 years. तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 साल बाद मजदूरों की तादाद जो होगी वो 500 होगी, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद there is a next question is on your screen. A shepherd has 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year. यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल क्या दिया हुआ है कि एक गड़िए के पास इब्तदा में जो है तो 200 बकरियां थी, हर साल इनकी तादाद में 10% इजाफा हुआ। बताइए 2 साल बाद गड़िए के पास कितनी बकरियां होगी। सो here you see that R is equal to rate of increase in sheep is equal to 8%. इब्तदा में बकरियों की तादाद अगर हम देखें तो वो कितनी है, तो नंबर ऑफ sheep इनिशियली इज़ 200, ओके, एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन sheep, बकरियों की तादाद में इजाफे की शरह अगर हम देख रहे हैं तो वो शरह कितनी है 8% every year, and n is equal to 3, and number of sheep after 3 years will be a. Okay, so here is the formula. A is equal to p into bracket 1 plus r upon 100 raised to n. So p is 200 and 1 plus 8 upon 100 raised to 3. So you will see here 200 into 108 upon 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100. So you will see here in the next step that these 20 and these 20 will cancel, and you will see here in the next step 2 into 108 into 108 into 108 upon 100 into 100. So that will be 25,19,424 upon 10,000. So finally you'll see that answer will be 251.94, means approximately that would be 252. Okay, so the shepherd will have approximately 252 sheep after 3 years. ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि 2 साल के बाद में अगर हम देखेंगे तो उसके पास जो बकरियों की तादाद होगी वो 252 होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 trees. Find the expected numbers of trees after 3 years if the objective is to be increase the number at the rate of 5% per year. So, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल दिया हुआ है कि एक तहफ़्फ़ुज़ गाह में 40,000 दरख्त थे। दरख्तों की तादाद में हर साल 5% का इजाफा की शरह से इजाफा करने का फ़ैसला किया गया। तो 3 साल बाद जो है तो तहफ़्फ़ुज़ गाह में दरख्तों की तादाद क्या होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर सवाल है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि जो दिया हुआ है
P is equal to number of trees initially of 40,000, and our rate of increase in trees is 5% PA, and N is equal to 3 years, and A is equal to 3 means number of trees after 3 years. Okay, so you see here the formula A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. So P is 4000, 1 plus 5 upon 100 raised to 3. So you will see here 40,000 into 105 upon 100 into 105 upon 100 into 105 upon 100. So you will see here that these 20, this 20, this 10, and this 10 will cancel. So you see here that 4 into 105 into 105 into 105 upon 100 will be the next step. So you will see here that after solving this step, you will get the step 46 lakhs 30,500 upon 100 means you will get here these 2 0 will cancel, and you will get here 46,305. Okay, so you will see here that there would be 46,305 trees after 3 years. ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों की जंगल में जो है तो 3 साल बाद जो है तो 46,305 दरख्त जो है तो होंगे इस तरह से. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर. सो द क्वेश्चन इज हेयर द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in price of machine after 2 years. आज एक मशीन जो है तो 2,50,000 रुपये में ख़रीदी गई है. खसारे की शरह 10% है यहाँ पर फी साल. तो इसे 2 साल बाद फ़रोख्त कर दिया जाए तो फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से कितना कम हो जाएगी. ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है. सो यू सी है दैट द cost price of machine after 2 years is A. Okay, then you see here the R rate of depreciation is equal to 10% per year. Okay, and you see here that P, the cost of machine initially is 2,50,000. Okay, and N is equal to 2. Okay, so you see here that A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. So P is equal to 2,50,000. Okay, so it into bracket 1 plus minus 10 upon 100 raised to 2. So you see here that 2,50,000 minus 90 upon 100 minus 90 upon 100. Okay, so you will see here that after solving this step, you will get here 20,000 2,02,500. Okay, so you will see here we are supposed to do the depreciation in the previous after the depreciation in the price after 2 years. अगर 2 साल बाद ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत में फ़र्क
खसारा हम देखें तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, 2,50,000 माइनस 2,205. So that would be 47,500. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 साल बाद जो खसारा है वो आप देखेंगे कितना होगा, 47,500 होगा. ओके, सो द डिप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन after 2 years is 47,500 rupees. Okay, so this like this we can find out the answer for this question number 4. Now we will move for the question number 5, and that is find the compound interest if the amount of certain principal after 2 years is 4,036.80 at the rate of 16 PCPA. So you will see here, here is amount A is equal to 4,036.80 and rate of interest R is equal to 16 PCPA and duration N is equal to 2 years. सो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों जो सवाल दिया हुआ है उससे हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार और. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी मखसूस असल ज़र का जो है तो 16% फी साल की शरह से 2 साल का कुल ज़र जो है तो 4,036.80 है, तो 2 साल का मुरक्कब सूद मालूम कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा ए जो है तो वो दिया हुआ है 4,036.80, आर दिया है 16 PCPA and duration n is equal to 2 years. Okay, so you will see here A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. So P is given here. We are supposed to find out here. A is given here 4,036.80 is equal to P 1 plus 16. R is given here 16. Okay, rate of interest is 16 PCPA upon 100. Okay, so you see here that 4,036.80 is equal to P 116 upon 100 raised to 2, means 4,036.80 is equal to P into 116 upon 100 into 116 upon 100, and you will see here in the next step P is equal to 4,036.80 into 100 into 100 upon 116 into 116. So you see here that P is equal to 40 lakhs 3,000 4,33,680 into 100. So into 100 upon 116 is equal to, after solving this step you will get 3,000. So now we are supposed to find out the compound interest here. So compound interest is equal to amount minus principal, and you will see here that would be 4,036 minus the 36.80 minus 3,000, and it would be 1,036.80. So required compound interest is 1,036.80. तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मतलूबा जो मुरक्कब सूद की रकम है वो कितनी होगी, 1,036.80 है, इस तरह से. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और उसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. तो आप देखेंगे अ लोन ऑफ 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12 PCPA, find the amount to settle the loan after 3 years.
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12% फी साल शरह मुरक्कब सूद से 15,000 रुपये कर्ज लिए गए, तो बताइए कि 3 साल बाद कितना कर्ज अदा करना होगा। ओके, ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। सो here you will see that principal P is equal to 15,000, rate of compound interest R is equal to 12 PCPA, duration is N is equal to 3 years. Okay, so here's a formula. A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. Okay, raised to N. So you will see here that 15,000 P is 15,000, then R is 12, then you will see here N is 3. So 15 into bracket 1 plus 12 upon 100 raised to 3. So you will see here that 15,000 into 112 upon 100 into 112 upon 100 into 112 upon 100. So you will see here that 20, this 20, this 10, and this 10 will cancel here, and you will see here that 15 into 112 into 112 into 112 upon 1000 will be the next step here. So after solving this step, so you will see here that 21,073.92 will be the answer here. So you will see here that the answer, the amount to be paid to settle the loan at the end of 3 years is 21,073.92 rupees. Okay, so this will be the answer. Now we will move for the next question. Here's a question on your screen. A principal amount to 13,924 in 2 years by compound interest at 8 PCPA. Find the principal. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या सवाल दिया है कि 18% फी साल शरह मुरक्कब सूद के हिसाब से किसी असल ज़र का 2 साल का कुल ज़र जो है तो वो कितना दिया है, 13,924 रुपये होता है। तो हमें यहाँ पर असल ज़र मालूम करना है, ठीक है। तो you will see here that solution amount A is equal to 13,924, duration N is equal to 2 years, and rate of interest R is equal to 18 PCPAs here. Okay, so here you see that A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. This formula we are supposed to take here, and after taking this formula we are supposed to mark out all the values in this formula. So 13,925 is equal to P into bracket 1 plus 18 upon 100 raised to 2. Okay, so you will see here that in the next step you will see here 13,924 is equal to P into bracket 118 upon 100. So it would be like this in the next step. P is equal to 13,924 into 100 into 100 upon 118 into 118. So after solving this step you will get here P is equal to 10,000. So the required principal is 10,000 here. Okay, so like this we can get the answer. Okay, and now we'll move for the next question, and that is on your screen. The population of suburb is 16,000. Find the rate of increase in the population
if the population after 2 years is 17,640. Okay, so solution is on your screen. Population P is equal to population of suburban initially is 16,000. A population of suburb after 2 years is equal to 17,640, and n is equal to duration is equal to 2 years. Okay, so let R be the rate of increase in the population per year. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इससे हम एक बात समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल यहाँ पर कि शहर के एक मोहल्ले की आबादी जो है तो मुतय्यन शरह से बढ़ती है। ठीक है, इस मोहल्ले की मौजूदा और 2 साल बाद की आबादी बिलतरतीब यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कितनी दी है, वो है 16,000 और 17,640 है। तो बस आबादी में इजाफे की शरह मालूम करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा कि पी जो है तो वो इब्तदा में मोहल्ले की आबादी है 16,000, फिर ए हमने देखा 2 साल बाद मोहल्ले की आबादी है 17,640, और एन जो दिया है वो 2 साल। और इसलिए हमने यहाँ पर फर्ज किया है कि फी साल आबादी में इजाफे की शरह जो है तो वो आर है। क्या है? लेट आर बी द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर है। ओके, सो यू सी हियर दैट ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। तो यहाँ पर हम देखेंगे 17,640 is equal to 16,000 into bracket 1 plus r upon 100 raised to 2. So you see here that 17,640 upon 16,000 is equal to 1 plus r upon 100 raised to 2. So you will see here after solving this step you will get here 42 upon 40 raised to 2 is equal to 1 plus r upon 100 raised to 2. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तरफैन का जज़र मुरब्बा लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both the side we get here 42 upon 40 is equal to 1 plus r upon 100. So you see here that 1 plus r upon 100 is equal to 42 upon 40. So therefore r upon 100 is equal to 42 upon 40 minus 1. So you see here that r upon 100 is equal to 42 minus 40, and r is equal to 2 upon 40 into 100. So after solving this step you will get here r is equal to 5. Okay, so you see here that the population of suburb increases 5% every year. ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि आबादी में इजाफे के शरह जो है तो वो कितनी है, वो है 5% है। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें दिया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 700 अमाउंट टू रेट 847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 PCPA। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि 700 रुपये का 10% फी साल शरह मुरक्कब सूद से कितने साल बाद कुल ज़र जो है तो 843 रुपये होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल है P वो इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 700, अमाउंट A इज इक्वल टू 847, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R इज इक्वल टू 10 PCPA. सो लेट N बी ड्यूरेशन। ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट किया मुद्दत n है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n. ओके, सो यू सी हेयर दैट 847 is equal to 700 into bracket 1 plus 10 upon 100 raised to n. So you will see here that
in the next step you will get here 847 upon 700 is equal to 1 plus 10 upon 100 raised to n. So you will see here after solving this step you will get here like this. 121 upon 100 is equal to 110 upon 100 raised to n, and you will get here 11 upon 10 raised to 2 is equal to 11 upon 10 raised to n. So finally you will get here n is equal to 2. तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मतलूबा मुद्दत जो है तो वो 2 साल है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना। द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज 2 years. ओके, like this we can get the answer. Now the last question you see here, question number 10. Find the difference between the simple interest and compound interest on 20,000 at 8 PCPA. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की 8% फी साल शरह सूद से 20,000 का 2 साल में होने वाले मुफर्रद सूद और मुरक्कब सूद के दरमियान फ़र्क मालूम करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे हेयर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 20,000 और आर रेट इज इक्वल टू 8 PCPA. ओके, और n इज इक्वल टू 2 years. ओके, ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n इंटू R अपॉन 100. ओके, सो P इज इक्वल टू 20,000, n इज इक्वल टू 2 और R is equal to 8 upon 100. Okay, so you will see here after solving this step you will see here that you will get here 2 into 8, so 200 into 16, and finally you will get 3,200. And now we are supposed to find out here the P. So A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. So you see here that P you will get here to 20,000 into 108 upon 100 into 108 upon 100. So you will get here 20, this 20 will be cancelled here, and you will get here 2 into 108 into 108 is equal to 23,328. okay, like this. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI इज इक्वल टू A माइनस P. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुरक्कब सूद बराबर जो है तो कुल ज़र नफ़ी असल ज़र होता है ना. सो 23,328 माइनस 20,000, सो यू विल गेट हियर 3,328. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि मुरक्कब सूद और मुफर्रद सूद के दरमियान जो फ़र्क है वो क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर difference between the simple interest and compound interest, means SCI minus SI is equal to 3,328 minus 3,200. okay, so you will get here 128. ठीक है, तो मुफर्रद सूद और मरकब सूद के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है, 128 रुपये का है. ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 128 रुपीज़. ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. So like this students, you can solve this practice set 14.2 like this. So students, here you required the practice again and again. Practice make you perfect in this exercise. Okay, so यहाँ पर आप बच्चों अगर बार बार मश्क करेंगे
तो आपको ये सवालात आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने तौर पर और हल कीजिए इससे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।